I saw a beautiful dream in which there was a beautiful location with sand. So I immediately decided to go to such place. I went to my friends and discussed my dream. So one of my friend Mukhtar, he suggested me that the similar place is Churdhar trek. So we immediately decided to go for that trek. We packed up our bags and started early in the morning. On the midway, we stopped for some snacks and drinks. After having our morning snacks, we immediately left for Nauradhar. After reaching to camping site, our first target was to set up our tent. So we immediately started setting up our tent. After setting up our tent, we collected some wood and started fire. After starting fire, we cooked some kappa noodles for us because we are very tired and hungry also. So we enjoyed kappa noodles along with beautiful evening sunset and evening view. After that, we went for a little walk and clicked some beautiful pictures. Not pictures, I would say beautiful memories or moments we captured there. Here are few for you guys. The trek itself is very exciting and we are enjoying it a lot. It is almost 18-kilometer trek. And the highest peak is the Churdhar itself. There is a small temple here, and a lot of people do this trek for their recreational and both religious and recreational purposes. Not many families come here. Mostly only young people and males come here for trekking, but I would say it is not that difficult. People can come with families or as well, and children also. Only some part of the trek is a little difficult, and you can avoid that by some alternate route that is available, that is easier also but longer.
So if you go for shortcuts, then only it is bit tricky. If you go by proper trekking route, then it is a lot easier, but almost like 1.5 times lengthier. But the most beautiful views that come across this trek are on the shortcut, because it comes through the most high peaks and valleys. So the views, if you want to enjoy the sceneries, I would say that you must try both of the ways. Like going up, you should go with the normal trekking route, and when coming down you can try shortcut route, because the coming down is lot easier than going up. तू कहाँ मैं यहाँ, तू कहाँ। शाबाश ले ठीक है, और ठीक है। मुरे भी देखी मैंने वीडियो चक्कर हो रहा है लोड पोड़ने खाली। तेनू मेरा फिक्र है कि कैमरे दा? तेनू मेरा फिक्र है कि यार ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ। ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕੈਮਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਭਲਾ ਉੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਏ। ਰੱਖੀ ਉੱਚੀ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੱਕ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਬਾਈ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਘੱਟ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ। ये पीछे है तेनू एक है होना मैं। देखो भाई, वो डेडिकेशन हो तो ऐसी। भाई को आंखों से थोड़ा वीक दिखता है, फिर भी पहाड़ों पे आया है वो देखो। हाँ भाई क्या करें अब इसको, ऐसे ना क्या करें, आखिरी तमन्ना थी इसकी, बस डेडिकेशन देखो भाई की, वो पूरी जरूर करनी थी। हाँ ये भाई को दिखता कुछ नहीं है, तो आप इससे सबक सीखिए थोड़ा। हाँ इंस्पिरेशन लें अगर इससे। ये आ सकता है तो आप क्यों नहीं। हाँ आपके तो दोनों टांगे आंखें सलामत है, इसके दो घुटने भी कंडम है, घुटने भी ठीक नहीं है। हाँ तो ये आप देखिए कितनी प्रॉब्लम है इसको। ओ वाह यार, सीन देखो काके, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹਰਾ ਪੱਥਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟ ਜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ऊपर ही चढ़ना, ऊपर ही आ जा। चढ़ना नहीं है ऊपर। ओ यार ए थल्लों फिर थल्ला पावांगे। नौलाधार तो आया, नौलाधार। थैंक यू। क्या एडवेंचर है ना। और सही है। In addition to that, the रास्ता भूल जाए, a whole adventure. What a journey. आ गया अमन, नेड़े आ जा। ओए आ जा, ठीक है रास्ता। वही लग रहा रास्ता ठीक है।
ਉਧਰ ਦੇ ਉਧਰ ਵੀ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋਊਗਾ ਰਸਤਾ ਮੰਨ ਜਾ ਕਰ ਫਿਰ ਹੁਣ now it's time to wrap up and go back to our car in Nauradhar. So we are heading back to Nauradhar. The trek was very exciting, we enjoyed it a lot and hope to see you guys in our next vlog at some other beautiful place. See you.